Hello, my dear students. Welcome back to PW IELTS and TOEFL Prep. I am Divya, your TOEFL expert. And today we are going to talk about some tips and techniques that can help you to get 30 out of 30 in your TOEFL listening. So if you remember from last 3 days, from last 3 classes, we are only working on the TOEFL listening. We did work on TOEFL listening conversation, then discussions, right? And even we discussed so many things about the TOEFL basics, listening that you need to keep in mind and the things that you need to avoid. But today we are going to talk about some tips that can help you to score more than 25, or I would say 30 out of 30 when we are looking for that. सो बात करते हैं टोफल के स्ट्रक्चर की. एक बार फिर से हम बेसिक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. सो लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. जस्ट अ मोमेंट. Okay, so here if I talk about the TOEFL listening, what we have understood, we have total 36 minutes. And in these 36 minutes, we're going to listen to conversation. We are going to listen to a lecture. And we have total 28 questions to answer, right? All of these questions are based on MCQs. You just need to listen, take notes, and then you have to answer the question. Now here, if I talk about some tips that can help you to get good score. So यहाँ पे क्या है? TOEFL listening overview. If I talk about, so here you have 3 lectures and you have 2 conversations, okay? Listening for details, you will be asked to listen for inference, listen for organizing, listen for speaker's opinion, listen for speaker's attitude, and based on that you have question. And I'm sure you all have understood this very carefully and very clearly because this is what we have practiced in last 2 days. Talking about why listening is important, ठीक है, listening क्यों important है? Listening is important because this is gonna give you 30 points and definitely this is gonna enhance your academic skills when you are actually going to the university. You are going to listen to your professor and then he is going to answer, or he is going to speak or give you a lecture, how comfortably, how clearly you can listen and then you can answer the question. ठीक है? ठीक है, आगे बात करते हैं. Now देखो conversation में क्या होता है? The conversation is between student and a staff or a professor, whereas the lecture is all about topic like science, history, arts. As usually speaker or a professor will give you your details, right? तो यही हमने सीखा है. Conversation में there will be two talking to each other. Conversation में listening में क्या होता है? Discussion होता है, ठीक है? What to expect? Focus on how people ask questions and respond, like their opinion and their attitudes. Talking about the number 1 strategy, or the very first thing that can help you to get your desired score is what? Practice. सबसे important है practice active listening. Now when I say practice active listening is what? That not only you are practicing the TOEFL content, but also you start listening to the music, start listening to the English content so that you can understand what is being talked, what is what they want to convey. So here do not just hear words, अंडरस्टैंड द मीनिंग. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, सुनते सुनते यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. यू जस्ट नीड टू कि अभी राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी एंड आई होप यू आर एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम कन्वेइंग. व्हाई? बिकॉज यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टफ एट द सेम टाइम. टॉकिंग अबाउट TOEFL में भी आपको यही करना है, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग एट द सेम टाइम. यू हैव टू डू इट. Understand the main point, supporting details, and of course the speaker's tone. That is what you need to do. Now effective note taking is something really really important. This is a game changer, I would say that. बहुत important होता है. Why? Because the way you are going to take notes, जिस तरीके से आप notes लोगे, this will help you. This will definitely help you to understand that what they are talking about. Your notes will help you to recollect whatever the information that you have heard. सब कुछ, okay?
सो हियर मेक श्योर कि आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे. नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी आई हैव ऑलरेडी शेयर विद यू that you will use abbreviation, you will use short forms, you will use some symbols so that you can understand what is being talked. आपके notes सिर्फ आपको help करने वाले हैं. Nobody is going to check your notes, nobody is going to give you score on your notes. तो make sure जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हैं, make sure you are making notes and you are able to answer the question. So here write down the keywords, the main idea, dates है, right? या फिर कोई transition है, right? Don't write everything. Just capture the essential information. Use abbreviation, use symbols, everything that I have already spoken, right? But here play a short clip. For example, daily basis पे आप क्या कर सकते हैं? Play a short clip and demonstrate how to take notes effectively. And taking notes is not a one-day practice. This is everyday practice. Hello Himanshu, very good afternoon. I hope you are doing great. Number 2, pre-listening strategy. Pre-listening strategy क्या होता है कि before starting, ठीक है, think about the type of question कि किस टाइप का question है. जैसे कि आपको last class में बताया गया है that in listening you will have 10 different type of question. You have question based on, you have question on gist purpose, you have question on information, you have question on detailing things. So make sure आप अच्छे से समझ लें कि क्या question है, what is being asked, what is the purpose of that particular question and predict the context. Type of question, detailed, main idea, inference, function, many more. There are 10 different type of categories, right? जैसे in this lecture on climate change, expect question on causes and effect, है ना? So आपको थोड़ा सा pre-listening practice करना पड़ेगा. You need to work hard so that you can understand कि okay, this type of if I'm listening to the conversation or maybe a lecture on this particular topic, so what are the possible questions that they may ask us? Okay, this will help you. टॉकिंग अबाउट रिकॉग्नाइज द साइन पोस्ट लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आपको बहुत हेल्प करता है टू फॉलो द सीक्वेंस, टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट आर द साइन पोस्ट वर्ड, जैसे फर्स्टली, हाउएवर, इन कंक्लूजन, सेकेंडली, देन आफ्टर, जो आपको हेल्प करता है टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द लैंग्वेज. सो हियर हेल्प टू फॉलो द फ्लो of the ideas in the conversation and in the lecture. Let's जैसे मैंने बोला okay, the very first thing that I would like to tell you, so मैंने first बोला first के बाद second आएगा, second के बाद third आएगा, like that. Okay, example of signpost word जैसे today we are going to talk about, right? Introduction हो गया, contrasting है on the other hand, right? Concluding है in summary. तो ये सारे words आपको help करते हैं to recognize where we are speaking, right? For example, identifying the signpost word from the audio clip. So जब भी आप audio clip सुनते हैं, make sure do not only listen, try to understand how they are, going one place to other place or maybe one information to the other, how they are, introducing the sequence of information. So वो signpost language में आती है. Then next step, focus on the tone and intonation because based on that also you will have question, right? इसके बेस पे भी आपके पास questions आते हैं. तो जैसे pay attention to how speaker stress word, right? Is speaker surprised, doubtful or excited? For example, rising and falling intonation often indicates question emphasized on certainty or uncertainty. Yes, I am sure. Are you sure? Can you see the difference? Are you sure? Are you sure? तो ये इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि डिग्री ऑफ सर्टेनिटी क्या है व्हेन द स्पीकर इज सेइंग यस आई एम श्योर, राइट? सो उसके बेसिस पे फॉर एग्जांपल द स्पीकर माइट बी sarcastic in the tone sound, so play the clip to show how the tone affects the meaning. So जितनी भी आप question है कि why, what the speaker wants to say here, why he's saying this, why he's saying that, what he wants to say here, आप उन्हें replay करिए और सुनिए, ठीक है? रेगुलर प्रैक्टिस इज द की, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को पता है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. प्रैक्टिस लिस्निंग टू द अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, यूएस एक्सेंट, कैनेडियन एक्सेंट, जितनी वैरायटी ऑफ एक्सेंट में आप लिसनिंग करेंगे, नॉट ओनली हैव टू लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट एंड हाउ दे आर सेइंग, अंडरस्टैंड, टेक नोट्स, उतने ही ज़्यादा आपको स्कोर आते हैं. टाइम्ड लिसनिंग प्रैक्टिस, सो मेक श्योर आप टाइम के अंदर करेंगे. टारगेट लीजिए कि 35 मिनट्स में ही मुझे पूरा कंप्लीट करना है क्वेश्चन. ओके, फॉर एग्जांपल ETS, TOEFL रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, पॉडकास्ट यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, एजुकेशनल चैनल्स हैं दैट कैन हेल्प यू टू हैव सम सोर्सेज.
Talking about the time management effectively, very important here. Time management tips. If I say you have to, limited time here. कितना time है? 35 minutes है. And you have, you have to spend 25 to 20 seconds in each question. Avoid second guessing, okay? And instead you are being actively listening. For example, get used to answering the question in a limited time. तो जब भी आप practice करते हैं, make sure कि प्रैक्टिस में भी आप लिमिटेड टाइम यूज़ करें. डोंट सी ओके दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू एंड यहाँ पर आई कैन डू एज मच एज आई कैन. नो, देयर ऑल्सो यू नीड टू प्रैक्टिस योर सेल्फ यूजिंग द टाइम. नाउ हियर एलिमिनेटिंग द वर्ड रॉन्ग आंसर. अगेन बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपको हेल्प करता है टू गेट द आंसर क्विकली. सो क्विकली आपको क्या करना है, जैसे ही आपने रीडिंग किया एंड आपके पास क्वेश्चन आए सामने, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उन आंसर्स को एलिमिनेट कर देंगे जो आपको लगता है मैम ये तो आंसर हो ही नहीं सकते. तो दीज आर द आंसर which I can easily eliminate. So process of elimination, I want you to do it. Hello Ranveer, very good afternoon. I hope you're doing great. Right, choice that are mentioned in the passage about don't answer the question directly, choice that include extreme, language, always, never, something like that. Go through the question and show how to elimination, the wrong answer. For example, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलिमिनेशन क्या करता है. एलिमिनेशन आपके एक तो पहले ऑप्शन को कट डाउन कर देता है. अनदर थिंग दैट यू कैन आउट ऑफ 4 आई एम श्योर कि 2 तो आप एलिमिनेट कर ही देते हैं. 2 में से एक राइट आंसर निकालना इज नॉट अ बिग टास्क. प्लस जैसे आप एलिमिनेशन करते हैं आपको हेल्प होता है और आप समझते हैं कि ओके दीज आर द थिंग दैट कैन नॉट बी आंसर. सो यू आर क्वाइट श्योर अबाउट योर आंसर कि जब ये नहीं है तो डेफिनेटली आंसर मेरा ए होगा. व्हेन बी सी डी इज नॉट द आंसर, सो द राइट आंसर इज ए ओनली. ओके, प्रैक्टिस पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी लैंग्वेज और जो ऑडियो होती है, जो लेक्चर्स होते हैं, जो कॉन्वर्सेशन होते हैं, द लैंग्वेज ऑफ बोथ द थिंग्स वेरीज, राइट, डिफरेंट होती है. दो द इन्फॉर्मेशन इज सेम, बट इफ यू फाइंड दैट द सेम लैंग्वेज दैट दे हैव यूज्ड इन द कॉन्वर्सेशन, सेम लैंग्वेज आपके पैसेज में होगी या क्वेश्चन में होगी, वो नहीं होता है. द लैंग्वेज विल बी पैराफ्रेज्ड. सो मेक श्योर द TOEFL ऑफन rephrase the spoken ideas into answer choices. So practice summarizing and rephrasing the clips. What to do is help you understand the exact meaning of the speaker ideas and try to identify some synonyms कि इसकी जगह हम और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और कर सकते थे. Like this is how what you can do. फाइनल टिप्स इफ आई वांट टू गिव, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट. देखो हमने ऑलरेडी 3 दिन बहुत ज़्यादा दिए हैं अपनी लिसनिंग को, जहाँ पर हमने प्रैक्टिस किया है. आज वाली क्लास में सिर्फ स्ट्रैटेजीज आई एम गोना शेयर विद यू कि जिससे आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए टू गेट द हायर स्कोर. स्ट्रेस can impact your listening ability, so make sure you are calm at the time of taking your test, right? Practice and do preparation. Relaxation technique, take a deep breath, exercise before the test, positive self talk and boost confidence. Focus on one section at a time, ज़्यादा नहीं करना है. So this is what you need to keep in mind. ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर लिसन टू द एग्जाम्पल लाइक लेक्चर एंड कॉन्वर्सेशन, राइट, आंसर 3 to 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड डिस्कस आंसर एंड वाई दे आर करेक्ट और मे बी वाई दे आर रॉन्ग. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो TOEFL लिसनिंग होता है, रिव्यू एंड कंक्लूजन, ये भी पहले देख लेते हैं. रिव्यू, key strategy, active listening, note taking, anticipating the question, managing the time, eliminate the process. Consistent practice can make you help you get good score. Stay focused and practice regularly. Now talking about, देखो मैं आपको पूरा बताती हूँ. यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास होते हैं टोटल कितने मिनट होते हैं, 36 minutes to answer 28 questions. Okay, now in these 36 minutes you will be listening to conversation, you will be listening to lectures. Now during this make sure you must take notes. यहाँ पर each conversation will have 5 questions
एंड जो कॉन्वर्सेशन होती हैं वो 2 to 3 होंगी आपके पास, एंड ईच lecture will have 6 questions and you will have again 3 lectures here. Apart from this, if I talk about lectures हो गए, ठीक है, all the questions are MCQs, ठीक है। अब इसमें भी 3 कैटेगरी आ जाती हैं, 1 करेक्ट आंसर, 2 correct answer, and replay questions, right? ये आपका बेसिक होता है। Now let me know if you have any question here, any single doubt, any question that you would like to discuss with me. I'm here to help you out, and I would strongly suggest you, though I am off stage so that you can see the screen for a while, right? I strongly suggest you that go for the recorded lecture if you have missed. Do practice as much as you can. बहुत important है ये सारी चीज़ें, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा. Make sure you do regular practice. This is really important. Ranveer and Himanshu, do you have any question? Any single question, anything that you would like to discuss? Come on. If you have any single question, anything that you would like to discuss, I'm here, because this is our second last lecture. Wednesday ko, when we have a lecture, I'm just gonna tell you some of the tips that can help you to, that can help you to give your best on the test day. So the last lecture that we are going to do on Wednesday, it is all about on the test day. Right? So before that, if you have any question, feel free to discuss with me. Feel free to come up with your points, with your doubts. I'm here to help you out. Let me see. Okay. ठीक है, perfect. Okay, it seems everything is quite clear. चलिए, बहुत अच्छी बात है. So looking forward to see you in the next lecture, जहाँ पर हम बात करेंगे that what are the things you can do to get your get, of course, overall good scoring, and just to give your best on the test day. Some of the tips and techniques we will be discussing. Thank you so much, and I'm gonna see you right at 3 p.m. on Wednesday. तब तक के लिए bye bye. Have a nice day.